नमस्ते, दिस इज मानस फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी डेस्क। यस, आपने सही सुना है, मानस फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी डेस्क। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा फूड। यस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड इज देयर इन होटल इंडस्ट्री। ठीक है, ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा पहले। इट्स मे बी नोबडी डिस्कस विथ यू। आप पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा आपको। ठीक है, हम आज बताने वाला है types of food, how many types of food is there, as per your origin, as per your nutrition value, as per your preparation method। so ये सब माइंड में रखते हुए खाने को कितना वेराइटीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन का बात करते हो तो इफ यू आर टॉक अबाउट ओरिजिन देन प्लांट बेस्ड, इट कैन बी प्लांट बेस्ड, मतलब इट कैन बी फ्रूट्स, कैन बी वेजिटेबल, ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, ये हो सकता है। एक एनिमल बेस होता है, एनिमल बेस फूड, जैसे आपका मीट हो गया, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स एंड एनी डेयरी प्रोडक्ट। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर ओरिजिन। अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू का हिसाब से देखते हो देन कार्बोहाइड्रेट फूड, प्रोटीन फूड, फैट फूड, विटामिन एंड मिनरल फूड्स, देन फाइबर रिच फूड्स। सो ये सारे वेराइटीज है न्यूट्रिशन का हिसाब से है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज एंड सीरियल्स, दिस ऑल फूड नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट फूड। प्रोटीन like meat, fish, egg, beans, tofu, any dairy product। all right, so important, these all protein is important for muscle tissue, they will increase your muscle for if you take high protein food like this, meat, fish, egg, beans, tofu, this is very high protein। and fats like butter, oil, nuts, avocado, cheese, these all you will make more fat on your body, it create always fatty acid। Vitamin and minerals, if you talk about the vitamin and minerals, then fruit, vegetable, nuts and dairy, these all will increase your vitamin in your body। if you want to make more fiber in your body then you have to take whole grain, beans, more vegetable and fruits, then it will be more, you will gain more fiber in your body। if you talk about your processing, the base on processing then or any method, then a fresh food like fresh vegetable, milk, egg, fresh meat, fresh fish, these all are fresh। processed food, packaged snacks, like pickles, cut meats, okay, these all are processed food। ultra processed food like Italian noodles, soft drinks, fast food, ये सब जो है रेडी टू ईट मील्स रहता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ओके, इफ यू टॉक अबाउट प्रिपरेशन मेथड, जिस हिसाब से खाना को बनाया जाता है, डिशेस प्रिपेयर किया जाता है एक 5 स्टार होटल में, उस हिसाब से अगर आपको बताना है खाना कितना तरीका का होता है, देन देयर इज ए रॉ फूड, कुक फूड एंड fermented food। so 3 variety: raw food, cooked food and fermented food। raw food like salad, sushi, sashimi and fresh fruits, these all you can eat raw। cooked food like grilled, steamed, fried, boiled, these all the dishes। fermented like yogurt, kimchi, vegetables, these all are fermented, these all are known as a fermented food। then if you based on cultural cuisine, okay, based on cultural cuisine, like cuisine का हिसाब से अगर बोलते हो तो if you talk about any cuisine like Asian cuisine, okay, then Western cuisine, Middle East cuisine, Asian cuisine like sushi, noodles, dumpling, curries, Western like burger, steak, sandwiches, these all Western style food। and Middle Western cuisine like kebab, falafel, hummus, pita bread, so these all।
I hope you enjoyed the video and you have a basic knowledge now about types of food. Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get more notification about this kind of learning video. Thank you so much. बना रहे हमारे साथ.